GoPro Hero 12 के अंदर सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा है ये फ्रंट LCD स्क्रीन का। तो आप जब व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो इस छोटी सी स्क्रीन में आप अपने आप को देख सकते हैं। ब्लॉगर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनके सराउंडिंग हो क्या रहा है वो देख सकें। फ़ोन के बैक कैमरा से जब आप वीडियो बनाते हैं तो उससे पता नहीं चलता है कि आपके सराउंडिंग हो क्या रहा है, मगर ये GoPro Hero 12 के अंदर ये फ्रंट LCD आई है जिसकी वजह से ब्लॉगर के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। The best thing of GoPro 12 Black is when your GoPro 12 Black is powered off and you want it to record something urgently, so you just need to press this recording button like this and boom, your recording has been started already. This is amazing, so you don't need to worry about losing your battery power, and when you want it to turn off you just press it again and it's powering off. Wow, cool. GoPro Hero 12 Black के अंदर आपको यहाँ पे ये माइक्रोफोन मिल जाएगा जिसकी क्वालिटी काफ़ी शानदार है। डायरेक्ट ही इसकी वॉइस जो है आपके कैमरा में जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त। एडिशनली आप इसके साथ वायरलेस माइक्रोफोन भी अटैच कर सकते हैं वाया ब्लूटूथ, और एयरपॉड्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये GoPro जो है वॉइस कमांड पे भी चल सकता है। मैंने ये GoPro 12 इसलिए बाय किया है क्योंकि मेरे पास पहले GoPro 7 था और काफ़ी अर्सा मैंने चलाया है। फिर मुझे एक अपग्रेड करना था तो मैंने ये GoPro 12 बाय किया है। काफ़ी सारे दोस्त हमारे ये कहेंगे कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है व्लॉगिंग के लिए, मगर मैं डिसएग्री करूँगा क्योंकि कुछ काम जो है फ़ोन नहीं कर सकता है। जैसे कि आप अपने फ़ोन को जो है बाइक और कार पे लगा नहीं सकते, मगर GoPro लगा सकते हैं। नॉट ऑल फोन्स आर वाटर रेजिस्टेंस, मगर GoPro 12 इस्तेमाल हो सकता है 10 मीटर पानी के बगैर प्रोटेक्शन के, और प्रोटेक्शन के साथ 60 मीटर्स तक इस्तेमाल हो सकता है पानी के अंदर। इट्स परफेक्ट फॉर योर एक्शन पैक्ड एडवेंचर्स। मुझे पर्सनली हाइकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है अपने दोस्तों के साथ, तो ये GoPro मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसकी पैकेजिंग देखी जाए तो बिल्कुल सेम पैकेजिंग है जो कि ग्लोबल मार्केट में सेल हो रहा है। ये मैंने चाइना से बाय किया है तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम पैकेजिंग है। इसके अंदर आपको एक माउंटिंग बकल मिलेगा, कर्व्ड एडहेसिव माउंट मिलेगा जो कि हेलमेट पे जब आप लगाते हैं GoPro तो उसके लिए काफ़ी सूटेबल है। इसके अंदर USB-C केबल मिलती है जो कि आप डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर एक बैटरी मिलती है। इसकी डिज़ाइन की बात की जाए तो बिल्कुल सेम ही है। 9, 10, 11 जो आ चुका है बिल्कुल सेम ही डिज़ाइन है, मगर इसके अंदर आपको फ़ील काफ़ी अच्छी मिलेगी, काफ़ी प्रीमियम फील मिलती है। हो सकता है क्योंकि महंगा है। इसकी आपको क्वालिटी मिलती है रोबस्ट की, अगर ये गिर भी जाता है तो ये डैमेज नहीं करेगा क्योंकि ये एक एक्शन कैमरा है। और इसके राइट साइड में आप देखते हैं तो उसके अंदर मिलता है आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और एक USB चार्जिंग पोर्ट। ये पूरा का पूरा वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस है। हीरो 10 के अंदर जो बैटरी आई थी इंडोरो बैटरी, वही बैटरी GoPro 12 के अंदर आई है, मगर इसका रन टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। 81 मिनट तक ये चला सकता है अगर आप 4K 60 FPS पे वीडियो बनाते हैं। 81 मिनट तक काफ़ी कमाल का है। I have never done, but I'm doing it only for a GoPro review. Let's see. Yay! So my drone flew with this GoPro 12 Black and it brought it back. Let's do a voice quality test
without the external microphone for the GoPro Hero 12 Black. So currently I am walking, and I hope this GoPro 12 Black is picking up my voice well despite the wind around me. It's very windy around here, and now I'm running. So this is the quality result you can expect from the GoPro 12 Black. Now I have connected my wireless earphone with this GoPro 12 Black, and now I'm walking, and I really hope that this wireless earphone can picking my voice very clearly, because it's windy here. It's always windy, and now I'm running. This is the voice quality you can achieve from GoPro 12 Black. Now it's time to put the GoPro 12 Black stability to the test. The GoPro 12 offers hyper smooth technology, which I don't fully understand, but it certainly sounds very smooth. Now let's take this test on higher level. I'm running at high speed. I think I should start my workout soon, because as I'm catching my breath. So should you consider upgrading to the GoPro 12 Black? Well, it depends your current GoPro model and your needs. If you have a GoPro 7 or 8, as I have been using GoPro 7, I'm thinking that upgrading could be worth it, because given that improvements in battery life and camera enhancement, I think it's good for me. Please share your thoughts about GoPro 12 Black in the comment below, and consider to drop a like and subscribe for more tech content. So we will see you in the next video. Stay connected and stay curious. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.